So today we are going to solve this problem using Vogel's approximation method. Here you can see there are three plants, plant 1, plant 2 and plant 3, and there are four distribution center 1, 2, 3 and 4. And the supply is from plant 1 6, from plant 2 1 and then from plant 3 10. Similarly, demand from distribution center 1 is 7, from 2 is 5, then it is from 3 it is 3, and from 4th it is 2. So this is our problem, and we have to solve this problem using Vogel's approximation method. And as you can see, the demand and supply are both equal to 17. It is a case of balanced transportation problem. First, we will find out the penalties. So row penalties. The penalty of first row. Minimum transportation cost is 2 and the second minimum is 3. The penalty is 1. In this second row, the penalty, the difference between minimum and second minimum is 1. Therefore, penalty is 1. In the third row, the difference between minimum and the second minimum is 3. तो ये हमारी इसकी पेनल्टीज हैं. Coming to the column penalties. Penalty of the first column, difference between 1 and 2, it is 1. Difference between 0 and 3, it is 3. Difference between 6 and 11, it is 5. Difference between 1 and 7, it is 6. So the column row penalties are 1, 3, 5 and 6. Now we will find out the highest penalty. Out of all the row and column penalty, we have to select the highest one. Here we can see that the highest one is 6. And in this column, the lowest cost cell is this one, whose cost is 1. Transportation cost is 1. So here we will see the demand and supply. The demand is 2, supply is 1. We will allocate 1 here. And we will update the demand. Demand update होके कितनी हो गई? 1. क्योंकि 1 डिमांड फुलफिल हो गई. रिमेनिंग बची हमारी 1. और ये वाला जो सेल है, ये वाला जो प्लांट है, इसका कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई. तो ये हमें क्रॉस करना है इसको. ये क्रॉस हो गया. ओके. ये हमारा क्रॉस हो गया. सेकेंड रो इज फिनिश्ड. नाउ वी मूव टू द we will again calculate the penalties. सेकेंड रो को हटाने के बाद हम पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट रो की पेनल्टी 1 ही आएगी, थर्ड रो की पेनल्टी 3 ही आएगी. कॉलम पेनल्टीज चेंज हो जाएंगी अब. तो यहाँ पर हम देखें कि क्या आएगी. तो 2 और 5 के बीच का डिफरेंस होगा 3 और 8 के बीच का डिफरेंस 5, 6 तो गायब है. तो 11 और 15 के बीच का डिफरेंस होगा 4 और 7 और 9 के बीच का डिफरेंस होगा 2. तो ये हमारी नई पेनल्टीज आ गई. Now we will see which one is the highest. This is the highest penalty. In this column, this is the lowest cost cell. Oh, sorry.
ये तो एलिमिनेट हो चुका है, इसको हम कलर्ड कर देते हैं ताकि हमें दिखता रहे कि ये एलिमिनेट हो गया। तो ये एलिमिनेट हो चुका है। तो अब हम आ रहे हैं कि इस वाले कॉलम, हाईएस्ट पेनल्टी ये सेकंड कॉलम की है, तो इसमें हमने देखा कि लोएस्ट कॉस्ट कौन सा है, 3 वाला। तो इसमें डिमांड सप्लाई देखी, 6 की सप्लाई है और डिमांड 5 की है, तो एलोकेशन हमारा कितना होगा, 5। तो ये हमारा एलोकेशन हो गया 5 यूनिट्स का। 5 यूनिट्स एलोकेट करते ही सप्लाई जो है वो चेंज हो जाएगी, अब कितनी बची, 1। और ये वाला जो है सेल, ये वाला जो कॉलम है, ये फिनिश हो गया, इसको क्रॉस कर दिया। ये ये वाली सप्लाई पूरी फिनिश हो चुकी है। सेकंड कॉलम इज नाउ नॉट देयर। अब हम फिर से पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट कॉलम की पेन इस फर्स्ट रो की पेनल्टी 2 और 7 का डिफरेंस 5। देन सेकंड इसकी निकालनी नहीं है, क्रॉस। फाइव एंड 9 का डिफरेंस 4। रो पेनल्टीज निकालते हैं, यहाँ पर आएगी अगेन 3, इसकी निकालनी नहीं है, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 2। तो हाईएस्ट पेनल्टी हमारी हुई 5। इसमें 5 में हमने देखा कौन सा कॉलम सबसे कम कॉस्ट वाला है, तो ये 2। अब इसमें डिमांड सप्लाई देखिए, 1 की सप्लाई बची हुई है यहाँ पर और 7 की डिमांड है, तो हमने कितना दे दिया यहाँ पर, 1 दे सकते हैं। 1 देने के बाद ये हमारा, ये वाली जो रो है, ये जो कॉलम है हमारा फिनिश हो गया, इसको क्रॉस कर दिया, इसकी सप्लाई फिनिश हो गई। ओके, तो सप्लाई फिनिश होते ही हमारा सिर्फ एक रो बचा हुआ है अब। तो जब हमारा एक ही रो बचता है, इन दैट केस इसको भी अपडेट कर देते हैं, यहाँ पर एक हम दे चुके हैं ऑलरेडी, तो ये 6 बचा। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक सिंगल रो बची हुई है, तो हम डिमांड सप्लाई की कंडीशन फुलफिल कर देंगे। जैसे यहाँ पर 6 की सप्लाई बची हुई थी, तो यहाँ 6 एलोकेट कर देंगे, और यहाँ पर हमारी 15 वाले में 3 की बची हुई थी, तो 3 कर देंगे, और यहाँ पर 1 बचा हुआ था तो 1 कर देंगे। तो ये पूरी मिला के 10 हो गया, और हमारा 10 की हमने सप्लाई फिनिश कर दी, और डिमांड भी हमारी पूरी हो गई। 6 यहाँ पे, 3 वहां पे और 1 वहां पे होने से हमारी पूरी डिमांड हो गई कंप्लीट। नाउ वी फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, जो एलोकेशन है उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 into 1 प्लस 3 into 5 प्लस
1 into 1 plus 5 into 6 plus 15 into 3 plus 9 into 1. So this will give the transportation cost, overall transportation cost. ये आ गई आपकी 102. Okay. Now, this is the Vogel's approximation method we have used to find the transportation cost in this case. I hope Vogel's approximation method is clear to you now. So all these methods, Vogel's approximation method and least cost method and the first one, northwest corner method, these are all methods to find the initial feasible solution of a transportation problem. To get the optimum solution, we have to use Modi method, which we may see in some other class. Also, when the total demand and total supply are equal, it is the case of balanced transportation problem. If demand is less or supply is less, if demand is less than supply, or if supply is less than demand, then this is the case of unbalanced transportation problem. To solve unbalanced transportation problem, you have to either introduce one extra supply source or one extra demand source. I will give you an example in next class. Okay, thank you.